हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। As the name suggests, combination means something combines. Combination reactions means the reactions in which two or more substances combines to form a single product. In general, we can say that if A and B, these reactants combine to form AB product. This is generalized reaction of combination reactions. Suppose we take examples. Carbon burns in the presence of oxygen to produce carbon dioxide. Hydrogen reacts with oxygen to form water. बैलेंस भी कर सकते हैं आप, ऑक्सीजन 2 है या 1 है, 2 कर दें, इसकी वजह से हाइड्रोजन, नाउ इट इज बैलेंस्ड. हाइड्रोजन combines with nitrogen to form ammonia. Here again hydrogen 3, here hydrogen 2, you can, and nitrogen is 2 nitrogen, hydrogen becomes 6, 3 hydrogen is 6 हो गया. Here in all the three reactions, two reactants combine to form single product. Therefore, these reactions are the examples of combination reactions. One more important example: calcium oxide, water reacts to form calcium hydroxide. This is calcium oxide, commonly called as quicklime, and this is calcium hydroxide, commonly known as slaked lime. ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम हिंदी में हम कहते हैं चूना, जब चूने को पानी में डाला जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, या हिंदी में कहें तो बुझा हुआ चूना. इसके साथ ही हीट भी प्रोड्यूस होती है. ये रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है. एक नया वीडियो में बनाऊंगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो वो भी आप देखिएगा. अभी हम आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो उधर डाइवर्ट नहीं होते. तो इसमें जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो दिस इज highly exothermic reaction. When calcium oxide mixed in water, calcium hydroxide is formed, and this calcium hydroxide is used for whitewashing of the walls of the houses. And one more reaction can be taken as example, which is not combination reaction but for explaining the whitewashing reaction. For the whitewashing, during whitewashing we use calcium hydroxide, which reacts with carbon dioxide of air and forms calcium carbonate and water. So when calcium hydroxide, this is calcium hydroxide, slaked lime, this is whitewashed on the walls of the house, reacts with carbon dioxide and calcium carbonate, which is white, along with the water. The water gets evaporated and this process takes 2 to 3 days. So after 2 to 3 days, the walls of the houses becomes shiny white. So that is the reason it reacts slowly with carbon dioxide to form calcium carbonate, which is white. This calcium carbonate is also a formula of limestone, but here it is giving shiny white
color to the walls of our houses. So these are some reactions which are explaining combination reactions. सभी को क्लियर है? वो रिएक्शंस जिनमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन कर कर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसमें ये एग्जांपल्स हैं. ये वाला जो रिएक्शन हमने एग्जांपल देखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें आपको क्विक लाइम, स्लेग्ड लाइम इनके नाम से, कॉमन नेम से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ये इनके केमिकल फार्मूला भी पूछे जा सकते हैं इनके कॉमन नेम से. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलो नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं. If you want to note down, you can note by pausing the video. वीडियो पॉज करके आप जो भी कुछ है नोट कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने एक्स्ट्रा रुकने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो पॉज करके सब नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन, this is opposite of combination reaction. Here what happens, the reactions in which a single substance breaks into two or more substances. Reactions in which a single substance breaks into two or more substances are called decomposition reactions. This decomposition reaction is again divided into three that we will discuss in detail. First one is thermal decomposition. That means decomposition on application of heat, or decomposition that takes place by providing heat. The second one is electrolysis and breakdown of any substance on application of electric current. Third one is photolysis. That means breakdown of a single substance into two or more on application of sunlight. Photo means sunlight, or lysis means breakdown. Here electro means electric current, say lysis means breakdown. So first we will discuss about the thermal decomposition. These are three types of decomposition reaction. तो thermal decomposition, इसकी भी हम definition लिख सकते हैं. The decomposition, if decomposition takes place on application of heat, or decomposition takes place on application of heat, is thermal decomposition. When decomposition takes place on heating a substance. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं जो सिंपल डिकम्पोजिशन में जो ब्रेकडाउन की बात है वो भी आप लिख सकते हैं इसमें, कि व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल सब्सटेंस into two or more substances on heating, or you can simply write when decomposition takes place on application of or heat, or on heating a substance, is called thermal decomposition. That you can write. Now we will take a few examples of thermal decomposition. Ferrous sulfate, this triangular sign on the arrow means heating. The ferrous sulfate, when heated, it forms Fe2O3, ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Here oxygen 3, 3, 6 to 8. So we can write here 2 Fe, 2 balanced. Simply writing 2 here,
will balance the chemical reaction. This is ferrous sulfate, ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. That means when we heat ferrous sulfate, ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide are formed. Single substance breaks into two or more substances. So this is thermal decomposition. Another reaction, calcium carbonate, when it is heated, broken down into calcium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate is heated, calcium oxide, carbon dioxide are formed. This is also example of thermal decomposition. One more example which is very important, lead nitrate, PbNO3 twice. When this is heated, lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen are produced. Balance it. Oxygen here is 1, 2, 2, 4, 5. Here it is 6. 6 and 5. Nitrogen is 2. You have to write 2 also here. बैलेंस करने के लिए हमें, तो ये ऐसे ही है, ऑक्सीजन को यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा. 4 करें तो 4n8. yes, this is balanced chemical equation. Lead nitrate when heated produce lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. This is nitrogen dioxide which is brown in color. Brown fumes are produced. तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सब्सटेंस इज हीटेड एंड ब्राउन गैस इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस. तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ब्राउन फ्यूम्स ब्राउन कलर होते हैं. जब लेड नाइट्रेट हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स आपको टेस्ट ट्यूब से या बोरिंग ट्यूब से निकलते हुए नजर आएंगे. तो these three are examples of thermal decomposition. On heating these single substances, they are broken into 2 or 3 products. So this is thermal decomposition. Now we will learn second part, that is electrolysis. Electrolysis means breakdown on application of electric current. So here we take example of water. वाटर का जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए यानी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, तो इट इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं. These are electrodes. This is one electrode. This is second electrode. These are graphite rods attached with the battery. नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल. ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया. वाटर इज फिल्ड. These are
covered with test tubes. Both the electrodes, that is anode and cathode, are, this is cathode, this is anode. They are covered with test tubes. Now, water present here will be broken down into hydrogen and oxygen. In this anode, oxygen will be produced, or here hydrogen will be produced. In diagram you see that the level of gas hydrogen is more than, or it is double the amount of oxygen. That means you can see when two water molecules are breaking down, then two molecules of hydrogen gas and one molecule of oxygen is produced. That means hydrogen gas is produced double the amount of oxygen. Therefore, the amount of hydrogen produced here is double the amount of oxygen. So this can also be asked in the exam, board exams, ki which gas during electrolysis of water is produced double the amount of other gas. Identify the gases produced. So in this way exam क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको समझ में आ गया होगा. वाटर में जब इलेक्ट्रिक यानी ये बैटरी ऑन करेंगे, यहाँ स्विच भी बना सकते हैं. जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी और ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा वाटर. तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है. नेक्स्ट, दिस इज आल्सो decomposition reaction. Third one is photolysis. Photolysis means decomposition. When decomposition takes place, on application of sunlight. सनलाइट किसी सब्सटेंस के ऊपर गिरेगी तो उससे जो ब्रेक डाउन होगा, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस. तो हियर वी टेक एग्जांपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड. जब यहाँ सनलाइट में रखा जाएगा सिल्वर क्लोराइड को, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. So this is silver, gray colored. This AgCl is white colored substance. This becomes gray due to the formation of silver. Chlorine and silver separate हो जाते हैं. तो this is also decomposition which is called photolysis. AgCl broken down into silver and chlorine. In the same way, silver bromide breaks into silver and bromine. तो यहाँ भी सेम, ये सिल्वर है, ग्रे कलर है. तो दीज टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. तो ये भी अपने ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में हिंट दिया जा सकता है और उसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच रिएक्शन इट इज. तो ये आपका फोटोलाइसिस क्लियर है. Now the third type of reaction, displacement reaction. Displacement reactions. Displacement में क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. The reactions in which a more reactive element displaces a less reactive
less reactive element from its salt solution. ठीक है, the reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution is called displacement reaction. ये अपने को ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो ये रिएक्शन आपने वैसे पढ़ा हुआ है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एग्जांपल, कॉपर सल्फेट आयरन, जब कॉपर सल्फेट में आयरन डालेंगे, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, देयरफॉर ये इसको क्या करेगा, सल्फेट कॉपर सल्फेट से छीन लेगा, और फेरस सल्फेट या ये आयरन सल्फेट कहिए, तो कॉपर सल्फेट सिर्फ आयरन सल्फेट आयंस छीन लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो हियर definition will be clear to you, iron is more reactive, therefore it displaces a less reactive element from its salt solution. कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें से आपको कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने, तो ये एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऐसे ही कॉपर सल्फेट जिंक, same zinc is more reactive than copper, therefore it again displaces copper from copper sulfate. Suppose iron sulfate है, zinc is also more reactive than iron, therefore it displaces iron from iron sulfate. These reactions are examples of displacement reaction. तो इसमें एक तो सिंपल आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, दूसरा अगर ऐसे दे दें आपको कि जिंक सल्फेट एंड आयरन, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो आपको यहां लिखना है नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा हो कि जिंक सल्फेट और आयरन, तो आप बना दें कि आयरन सल्फेट और जिंक, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, देयरफॉर इट कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के साथ इस तरह से आप नो रिएक्शन लिखकर उसका रीजन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ ले मान लो कि तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट displacement reaction. More reactive element displaces a less reactive from its salt solution. This is displacement reaction. Now double displacement reaction, the fourth type of reaction, double displacement reactions. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होता है इसमें, इन दिस रिएक्शन व्हेन ions are exchanged between the compounds, then the reaction is called double displacement reaction. So when ions are exchanged between the compounds, then the reaction is called double displacement reaction. So here also very important example, sodium sulfate when reacts with barium chloride, ये ऐसे ब्रेक होगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, जिस तरह से आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सल्फेट आयन बेरियम ले लेगा, सोडियम क्लोराइड आयन रिएक्ट करेंगे, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेंगे, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो ये जो बेरियम सल्फेट है, दिस इज बेरियम सल्फेट,
दिस बेरियम सल्फेट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये दो जो सब्सटेंसेस हैं, मान लीजिए ये पानी में है, ये एक्वस है, क्लियर सॉल्यूशन है दोनों के, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस बनेगी जो कि सेटल्ड एट द बॉटम हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, तो इस तरह के जो रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड precipitation reaction. So this is example of double displacement reaction where the ions are exchanged between the compounds. ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का। Now the last fifth type of reaction, that is oxidation and reduction. So before discussing oxidation and reduction reactions, we discuss about the oxidation and reduction. What is oxidation and what is reduction? Oxidation means addition of oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो देन इट इज ऑक्सीडेशन। हियर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं रिडक्शन। इसी तरह इनके रिवर्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, और यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो वो भी रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, these two are, and one more, oxidation means removal of electron, और यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की। We have copper. When copper is heated in the presence of oxygen, then copper oxide is formed. This is copper oxide, black colored substance है copper oxide. So copper when heated in the presence of oxygen, then copper oxide black color substance is formed. तो here also color इससे identify करना है हमें कि copper is heated in the presence of oxygen, black colored substance is formed, identify the substance. किसी तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपने को ध्यान रखना है कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो हम ये क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन का खुद का क्या हुआ, खुद वो क्या हो गई, रिडक्शन। ऑक्सीजन का यहां पर रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक, इसी में एक और रिएक्शन ले, कॉपर ऑक्साइड जो है, अगर हम कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन पास करें, हीटेड कॉपर ऑक्साइड है जो कि ब्लैक है, हम उस पर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या होगा, कॉपर एंड वाटर आर फॉर्म्ड, दिस कॉपर अगेन इज ब्राउन कलर, तो जो ब्लैक कलर होगा वो वापस ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट होने लग जाएगा व्हेन हीटेड कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। ब्राउन कलर ऑफ दैट मीन्स कॉपर फॉर्म्ड along with the formation of water। तो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, तो यहां देखें कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज
रिडक्शन। यहां हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ और वाटर बन गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो गया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह आप और रिएक्शंस का एग्जांपल ले सकते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसमें जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी आप देखें तो जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो ये रिडक्शन है। और कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन दिस वे यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इन बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कोई रिएक्शन दिया होता है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच कंपाउंड हियर इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, तो ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये अपने को इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की हेल्प से समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इनके रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट मी, और आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो यू कैन लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that whenever new videos are uploaded on the channel you will get the notification. Thank you everyone.